Hello everyone, this is Amrita Shwani. Today at Geeks for Geeks, we are going to decode the modern job landscapes with the perspective of an HR. And for the same, we have called Mr. Divyanshu Kumar, HRBP Operations from our very own organization, Geeks for Geeks. So Divyanshu, how are you? I'm doing really great, Amrita. Thank you so much for asking. So, Divyanshu, when I was going through your profile, I just went through and read a lot about you. And I got to know that earlier you have been an Android developer, a Java developer, and then you became an IT recruiter, right? And now you are an integral part of Geeks for Geeks itself. So, how would you describe your transformation journey right now? It was a quite unpredictable journey, Amrita. So I got placed in a company named Stainmates in my college, and I completed 6 months as a Java developer intern in that company. And then I moved ahead with the Android development program. It was again an internship in Jodhpur, but again, there was an outbreak of Zika virus over there, and for safety measures, I had to move my hometown. So at that point of time I was not having much options, and there was no one, seniors to guide me, frankly. So I started looking out for jobs in Noida, Delhi, or any, reason all over India. So I got a job in Noida as an IT recruiter, and I thought ki let's give it a try, just because ki when I'll be moving over there, I'll definitely get a, chance मिल जाएगा. तो I'll try to give interviews, but again the job था, जो job role हमें provide किया गया था, it was quite good, and I started enjoying. And then I started building my own team. My seniors supported me, they given me good, resources, and I again moved ahead with the, you can say it was a good go with the flow scenario over there. Okay. So, Divyanshu, what is my understanding about life is sometimes we do understand things, but we do not accept them. So, आपके लिए कितना मुश्किल था इस चीज को accept करना to change your domain completely from becoming a developer. You were fresh out of your college, आप fresher थे and आपको job मिला ही था college placement के through, and आप change करे within a few months you switch from developer to becoming an IT recruiter. And it takes a lot, मेरे को ऐसा लगता है, Right. because आपने 4 साल बीटेक किया, you studied hard, you cleared those 4 years, and then you switched all of a sudden because of some virus outbreak. Your entire, your entire future planning जो आपने करी होगी अपनी life को लेके, that was changed. So how difficult it was for you to accept it? एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई सीनियर नहीं होता था, जैसे मैंने बताया था, जो गाइड करे. अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको गाइड करती है, मेंटोर्स आर देयर. सो वहाँ पे मेरा मेन फोकस था दैट आई हैड टू गेट अ जॉब, बिकॉज अगर आपके करियर में एक ब्रेक आ जाता है, देन इट इज रियली हार्ड टू जस्टिफाई दैट ब्रेक. एंड बीइंग अ फ्रेशर, everyone should have a priority to get a job first. And that job was purely non-tech तो नहीं कह सकते, but हाँ, I was handling European countries and APAC region and EMEA region over there. So I was good over there, and I was handling tech positions only. So थोड़ा तो ये था कि चलो डेवलपमेंट में नहीं है, बट आई वॉज हायरिंग दोज डेवलपर्स. ये सेटिस्फेक्शन था, एंड क्वाइट अ गुड मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर्ड ओवर देयर. तो आई गॉट अ लर्निंग ओवर देयर. मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जो मैनेजर्स को, मैनेजमेंट स्किल्स कह सकते हैं. तो इट वॉज गुड लर्निंग, एंड आई विल सजेस्ट कि embrace whatever thing you are getting in your career, so that will obviously going to be fruitful in your future. Right, right. So, what I understand, like, for me, it was also very difficult because I passed out my master's in COVID itself. My last semester was in 2020 itself, Uh, but sometimes we need that, composure inside ourselves. And seeing at you, like, how much patience you hold inside your journey is truly inspiring to us. It was like a hard, but again, I will suggest कि go with the flow. और दो तीन चीजें हैं, you need to focus, because अभी के टाइम पे there are a lot of things, lot of guides, mentors are available online. So ज्यादा rush करने की जरूरत नहीं है, आपको काफी easily काफी चीजें अभी मिल जाएंगी. दिव्यांशु, जितना भी अभी हमारी बात है, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, एज वी डिस्कस दैट
it was the time, it was the scenario, it was the Zika, it was the COVID outbreak for you and me, as we said, and as we discussed just right over this table. But हर इंसान के अंदर ना एक अपनी चाह होती है. There is always something which we really wanted to be in our life. So are you really satisfied? Or I know that you are satisfied. You are also satisfied at this place and being in the role which you have at this, being a young HR in your 20s and being so, calm and composed and satisfied. But there's always something which kills us inside and we always wanted to be. So there's something which I know, and would you like to share with us? Sure, sure, Amrita. Like everybody in this universe, I guess, had some dream, right? मेरा भी था. Like I always wanted to be, pilot. बचपन में मतलब कहते हैं, but I wanted to be since. But again, destiny you can say or something. I just went with the flow, right? So I decided I had applied over there, but again, circumstances not favored me, and yeah, as I told you, like first priority, right? So first priority was getting a job after graduation. So it was again coming back to the same thing कि हाँ जॉब ले लो, फैमिली का भी प्रेशर रहता है, तो वी हैव टू फेस ऑलवेज. अब ये नहीं होता ना हर किसी को हर चीज मिल जाती है, बट अगेन यू हैव टू एम्ब्रेस वॉट एवर थिंग यू आर गेटिंग in Right, nowadays, because settling yourself is the first priority, and it should right, be always. right. Because our independence can lead us to our desires. Right. If we are independent, it will lead us to what we wanted. So someday, I just hope that you get to fly one good big plane. Definitely, and I'll definitely give it a try. so Divyanshu, let's come to our next question. How important are skill sets? Like whenever you hire an individual, or whenever a young mind or a professional, is willing to switch a job or is looking for a job, how important is the criteria of having a niche category skill set in which they at least excel? I'll say one should not try to be, master of all trades, right? But again, एक बंदे को, if he or she has decided his career, then he should possess at least one skill set जिसके basis पे he can, bring bread and butter in his table. So I'll be very, honest over here. हर किसी कैंडिडेट को I always suggest कि आप जिस पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर रोल के बारे में एटलीस्ट जानो, बेसिक्स तो क्लियर हो. एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ वी आर हायरिंग फॉर अ जावा डेवलपर, देन आई विल ऑलवेज लुक फॉर अ पर्सन जिसका जावा नॉलेज पे कमांड हो. Right, Right? right. तो वो चीज तो हर रिक्रूटर देखता है. दैट इज द बेसिक थिंग. आपकी बात से व्हाट आई कैन जज इज कि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट में. फ्रेशर्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, एनीवन हु इज लुकिंग फॉर द जॉब, उनके लिए एक स्किल में एक्सेल करना मे बी मेरे पर्सपेक्टिव से इसलिए ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके या एक ग्लोबली दे हैव टू मेक देयर ओन नेम. बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा है राइट, राइट. एंड अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से है नहीं. वी डू से कि वी डू हैव अपॉर्चुनिटीज, बट अगर आप आज के करंट मार्केट सिनारियोज देखें, बहुत सारी जगह हायरिंग फ्रीजेस हैं. दे से अगेन कंपनीज आर लाइक कि हाँ हम नहीं निकाल रहे, बट अगेन वी नो देयर आर साइलेंट फायरिंग ऑल्सो गोइंग ऑन इन द राइट, मार्केट, राइट. राइट? एंड पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स. बट इन द करंट मार्केट सिनारियोज व्हाट आई पर्सनली फील, एंड आपकी बात से ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक स्किल सेट हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, राइट? राइट, राइट. सो आई विल सजेस्ट कि आप कहीं ध्यान मत दो. बीइंग अ फ्रेशर, आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि जब तक आपका कॉलेज चल रहा है, तो आप पहले तो अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करो. ट्राई टू गेट एन इंटर्नशिप इन अ गुड कंपनी. राइट, राइट, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो वॉट एवर थिंग यू आर लर्निंग इन योर क्लास. ट्राई टू कोड वॉट एवर थिंग यू आर कोडिंग, जिस भी डोमेन में आप जा रहे हो कोड करो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो थ्योरी को. एंड अगेन मूविंग अहेड, अगर किसी एक सिंपल लैंग्वेज को आपने चुन लिया तो आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर ही फोकस करो. 5 चीजों को करने के साथ एक भी चीज सही नहीं होगी आपकी. तो अगर आप एक स्किल सेट्स को लेके आगे बढ़ रहे हो, तो एक कंपनी में नहीं होगी, 3 4 कंपनी भी है यार, वहां तो हो ही जाएगी आपकी जॉब.
और उसके बाद अगर आप शुरू कर रहे हो बीइंग एन एसोसिएट लेवल, देन एग्जीक्यूटिव, देन सीनियरिटी, तो मैनेजमेंट स्किल सेट जो मैनेजर्स देखते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वो सारी चीजें आ जाती है। सो इट्स नॉट लाइक ए रॉकेट साइंस, बट हाँ, आप धीरे धीरे शुरू करो, ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर theoretical knowledge to your practical life, then it will get, whatever problem you'll have, then you'll become a problem solving skill, as well. Well said about these things, Devanshu. That skill set is very important, but when you recruit an individual for a particular role, what are your personal preferences? Like, what do you look, what is your eye, on which you keep on hovering, and how you like this one thing should be there. What is your perspective, when you are hiring someone, like, as a recruiter? As a recruiter, as I told you, if we are hiring for a particular role, तो basic जो उसकी चीजें हैं, we'll try to focus on that. If we are hiring for a Django developer, then person should be good in the Django or Java developer, or I'll give you a basic, ब्रह्मास्त्र जिसमें कह सकते हैं, DSA strong कर लो, and it will be very easier to get a job you can land in a good company. So सो दिव्यांशु, अभी जैसे हमने स्किल सेट के बारे में बात करी, hmm, और हमने अभी बात करा कि डीएसए बहुत स्ट्रांग होना right, चाहिए. right. It is the pillar. Like DSA, किसी भी जॉब का Obviously, पिलर है. yes. In tech industry, in software industry, data structure and algorithm, they are like, it's a basic subject. It's Right. the ABCD of this field, right? So, like, would you like to suggest any kind of training programs and something from where students, college students, even college faculties or college management, they can take those lessons and they can provide it to their students, and student can, have a brighter, better future. डेफिनेटली मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बट जो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है, आई विल रिकमेंड CIP कोर्स, कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स. सो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है. वन कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड कैन बिकम अ प्रो एज वेल. Did you just hear CIP? So let me tell you what CIP is. Complete Interview Preparation. It's a 150 hours job centric technical campus training program which can be customized as per the preferences. And in this, you can learn the DSA from beginning to advanced level. Design analysis, aptitude and reasoning, resume building, 5 DSA implemented projects, live mentor sessions. Hey, wait, there are few more things. 24 hours doubt support, placement assistance, tracking reports of each student's real-time placement-oriented contest. So visit Geeks for Geeks platform and explore more. Now let's get back to the podcast. ओके, सो दिव्यांशु, अभी तक तो हमने काफी डिस्कस कर लिया अबाउट स्किल सेट एंड एक एचआर के पर्सपेक्टिव से रिक्रूटमेंट करना, या फिर व्हाट यू सी इन अ स्टूडेंट और इन अ फ्रेशर और इवन इन अ वर्किंग प्रोफेशनल. बट व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट और any individual should commonly have few habits in themselves so that they can excel in their career? What I see currently nowadays, like people usually go to ChatGPT, right? They used to Google for every possible solutions. But I'll suggest, as per my previous experience and personal experience, I'll say कि हमारे टाइम में नेट उतना फास्ट था नहीं, इन 17 18 काइंड ऑफ थिंग. तो वहाँ पे वी यूज टू गो टू लाइब्रेरी, राइट, एंड लाइब्रेरी में वी यूज टू रिसर्च थ्रू बुक्स. तो वहाँ पे क्या होता था कि हमें अगर एक चीज़, हम किसी एक टॉपिक को रिसर्च कर रहे हैं, किसी एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देन वी यूज टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम काफ़ी चीज़ें सीख जाते थे. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिसर्च करो, आप बुक रीडिंग करो. क्योंकि गूगल पे काफ़ी जो ब्लॉग्स हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, कोई भी कुछ भी लिख दे रहा है. आई विल नॉट, this is not a controversial comment I am doing, but again, it is a better, prevention is better than cure. So try to read books, try to research on every possible thing, whatever problem you have. आप रिसर्च करोगे तो आपको काफ़ी बेटर सॉल्यूशंस मिल सकते हैं. तो डिसिप्लिन होना चाहिए, रिसर्च की आदत होना चाहिए, बुक रीडिंग,
एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आपको एक कंसिस्टेंसी और एक टाइम मैनेजमेंट चीज़ें आ जाएगी। तो आपका जो टाइम और जो स्केड्यूल बनेगा उसको आपको फॉलो करना है। तो आई सजेस्ट कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको कंटिन्यूअसली डेली रूटीन में आप अगर कर रहे हो तो यू विल गेट गुड रिजल्ट। So Divyanshu, book reading, like it's a dying habit nowadays, है ना? राइट। So I do understand बहुत difficult होगा आज की generation Gen Z के लिए जेंजीज, to राइट। develop that habit. But ये जो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, ये हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो एज पर विद द आई ऑफ एन HR person, as a IT recruiter, what do you forecast about the technical market and the recruiting scenarios or the job opportunities in next 5 years? In next 5 years, yeah, I'm not an astrologer, but I'll definitely recommend, कि आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो हर एक जिस भी पर्टिकुलर डोमेन में जा रहे हो। एंड द बेसिक्स फॉर एवरीथिंग इज DSA as per my point of view. And again, marketing, I mean, market is going ahead, and I can see like there will be a big boom in AI and machine learning and data science. So we should be prepared about that. तो उसमें काफी बूम आने वाला है, right? Right. I do understand that people have this scare of, chat GPT going to take over, Right. their job profiles. But I think like it is something made by a software, which is again made by a man, a human. And I don't think so it will replace anyone until and unless somebody becomes यू आर irreplaceable. राइट, यू आर राइट, ऐसा नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली ये पहले से चलता है, ये जो हमारी अभी ये आपका क्वेश्चन है, ये पहले भी आया था 70s में जब हमारे मशीनरीज आई थी, चीज़ें ऑटोमेट होने लगी थी। तो अभी भी इट इज़ जस्ट अ हेल्पिंग टूल। इट्स नॉट लाइक कि किसी की भी जॉब जाएगी, बट अगेन इट कैन मेक योर वर्क वास्ट ईजियर। जो काम आप 2 घंटे 3 घंटे में कर सकते थे, जो मेल, आई गिव यू अ बेसिक एग्जांपल, जो मेल आप लिख सकते हो आप 1 घंटे में, you can just give the content, right? आप वहाँ पे कंटेंट पब्लिश कर दो एंड ही कैन सजेस्ट यू इन बेटर वेज। 2-3 वेज में आपको वो ईमेल, एक सिंपल ईमेल टेम्पलेट दे देंगे एंड यू कैन फिनिश द टास्क इन 15 to 20 minutes। सो दैट इज द ओनली थिंग। ये एक परसेप्शन बन गया है, ह्यूमर्स कह सकते हैं इसको। None, no one will get affected from ChatGPT. Either it will make your life, very easy. And जहाँ तक की बात है फ्यूचर की, तो I'll suggest कि data science and AI is the future. That is very true. That is very true because one should keep moving themselves, with the current market trends. And we can truly say that sugar is sweet, but it becomes harmful, when it is Right, too right. much, right? So thank you, Divyanshu, for being with us today. Most welcome, Amrita. Thank you so much. And for our viewers, we really appreciate your presence at our platform Geeks for Geeks Campus Connect. GFG कर लो, हो जाएगा.